हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा मैथ्स डिस्कसिंग पार्ट 6 of the chapter coordinates geometry of class 9th mathematics, that is from new syllabus. This is part 6. Part 1 means multiple choice questions. 1 to 10 we have done in first part. Question number 11 to 20 in second part. Question number 21 to 30 in part 3. 31 to 40 part 4 and question 41 to question 50 part 5. हमने 50 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं. You can watch all these in part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5. There are varieties of questions and very similar and some different questions. Please go through it. And this is part 6. And this is question number 51. The question says, on plotting these points plotted on the graph paper, then points in third quadrant are. अगर मैं इस क्वेश्चन पे देखूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स होंगे? सी इन थर्ड क्वाड्रेंट वी सी x coordinate is negative and y coordinate is also negative. So here we see that that is negative and negative, so P point will be there and R point is also there. Both are negative. Means P and R, both 2 points will be in the third quadrant. So P and R, that is D, is the correct option. On plotting these points are plotted on the graph paper, then points in the fourth quadrant are. We know in the fourth quadrant, X is positive and Y is negative. Means first component should be positive, second should be negative. See here. First positive and second negative, that is point Q. Point Q, first positive, second negative. So Q and R, that is correct answer. So B is the correct option. The coordinates of the 2 points P and Q are -7, 5 and Q are -6, 9. 2 पॉइंट्स है P और Q, उनके कोऑर्डिनेट्स -7, 5 और -6, 9 है. देखिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है एब्सिसा और पॉइंट P. -6 इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q. हमें चाहिए एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q. तो देखिए, एब्सिसा ऑफ P इज -7. ब्रैकेट में पुट कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट abscissa of Q, that is -6. And you have to simplify now. -6, -7 plus 6, that is -1. So abscissa of P minus abscissa of Q, that is -1. So we can say D is the correct option. If the coordinates of 2 points means P, that is -7, 5 and Q, that is -6, 9, then what 4 times of abscissa of Q minus 3 times of abscissa of P will be? We know abscissa of P is -7 and abscissa of Q is -6. First, the component of the order pair is x coordinate, that is abscissa. So then what we have to do? 4 times of abscissa of Q, that is -6, minus 3 times of abscissa of P, that is -7. That is -24 plus 21, that is -3. So what is answer? A is the correct option.
Coordinates of the 2 points given -7,5 and -6,9. First component is the abscissa and second component is ordinate. Means x coordinate is abscissa and a y coordinate is called ordinate of the given point. Abscissa of point Q, that is -6. Ordinate of point P, that is 5. So abscissa, that is -6, and add करिएगा ordinate of point P, that is 5. So -6 plus 5, that is -1 answer. So D is the correct option. If the coordinates, read the question twice, please. Means in mathematics, understanding the question means half done. अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधा काम कर लिया. So read the question twice. If the coordinates of one end of a diameter of a circle are 2, 3, and the coordinates of its center is are -2, 5, then find the coordinate of the other end of the diameter. That will be, say, ये हमारे पास एक सर्कल है और ए भी एक कोड है और ये इसका सेंटर है. ये पॉइंट ए है और इसका जो कोऑर्डिनेट है इट इज गिवन 2,3. और ये जो ये है दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर आर. एंड लेट दिस इज डायमीटर, दिस इज वन एंड एंड दिस इज अदर एंड. ये इसका अदर एंड है और हमें इसके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे. और हमने सपोज किया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी मींस अदर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल ए आर ए कोमा बी. हमें वैल्यू ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू चाहिए. मींस हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी. We know that center of the circle is midpoint of the end of the points of diameter. AB diameter का mid point है ये. तो यहां पे हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? लेट दिस पॉइंट इज ओ मींस सेंटर ऑफ दिस सर्कल है ये. O is midpoint, so O is midpoint of the circle of AB. तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 विल बी दिस. मीन्स 2 plus A divided by 2, that will be equal to the midpoint, that is -2. So can you simplify 2 plus A? That is 2 to the -4. So what is A? A is equal to -4 minus 2, that is -6. So the value of A is -6, means the value of x coordinate of the point B, that is -6. And for this 3 plus B divided by 2, that is 5. On further simplification, 5 to the 10 minus 3, that is 7. Or the value of B will be 7. So x coordinate is -6, y coordinate is 7. So that is -6, 7. इस एंड पॉइंट का डायमीटर के जो सेकंड एंड है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -6, 7. सो उधर देखिए लेफ्ट में -6, 7 मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन. If the coordinates of the 2 points are -6, -5 and Q, that is 6, -9, then what is the difference of abscissa of point Q and abscissa of any point on the y-axis? Say the abscissa means x coordinate of point Q, that is 6.
An abscissa of any point on y-axis. क्या होता है abscissa on means x coordinate on y-axis? Can you recall it? याद करिए क्या होता है abscissa of any point on y-axis. Say abscissa means x coordinate on y-axis is always 0. Please keep in mind. So 6 minus 0 is 6. So D is the correct option. The midpoint of the line segment joining the 2 points A and B will be the coordinates of point A are this and coordinates of point B are -6, -4. हमें पता है how to give the midpoint. Midpoint is given by the coordinates of midpoint are given by x1 plus x2 by 2. ये x coordinate होगा and y1 plus y2 by 2 ये midpoint के coordinates होंगे. x1 is -2, x2 is -6 divided by 2 तो divide करिएगा. -6 2 में -6 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए. y1 plus y2 by 2 दिस इज y1 दैट इज y2. 8 में -4 ऐड करिए डिवाइड बाय 2. सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ, मैं इसको ठीक करता हूं. 8 -4 divided by 2 that is -8 by 2 and that is 4 by 2, so that is -4, 2. So C is the correct option. The distance of the point with coordinates -6, 8 from the origin is. Origin से point P जिसके कोऑर्डिनेट -6 और 8 हैं का डिस्टेंस क्या होगा? देखिए वी हैव द डिस्टेंस फॉर्मूला. ये P है, द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन -6, 8 एंड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं 0, 0. अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है. तो देखिए डिस्टेंस इज गिवन बाय x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा. इन प्लेस ऑफ x2 राइट -6, x1 0. इन प्लेस ऑफ y2 8 एंड y1 0. -6 -0 that is -6 and -6 whole square is +36. Note करिएगा the square of negative is positive and 8 square is 64. So 36 plus 64 take its square root that is 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? That is 10. So distance between the point P and origin that is 10 units. A point P with coordinates a, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q and R. The coordinates of given will and then the value of A is.
क्यू और आर ये दो एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये इसका मिड पॉइंट है। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, मींस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर। सी, एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स क्यू दैट इज -6,5 है और आर दैट इज -2,3 है। इसका मिड पॉइंट है, यहां पे देखिए, दैट इज लाइन सेगमेंट इज क्यू आर एंड लेट हियर इज द मिड पॉइंट एंड इट इज गिवन दैट इज पॉइंट पी विथ कोऑर्डिनेट्स a,4। Okay, now we have to use the midpoint formula. So midpoint is given by x1 plus x2 divided by 2, that will be x coordinate of the midpoint, and y1 plus y2 by 2, that will be y coordinate of the midpoint. X1 is -6, x2 is -2 divided by 2, and y1 is 5, y2 is 3 divided by 2. On further simplification, that is -4, -6 -2 upon 2 -8 by 2, that is -4, and that is 4. ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है पी के, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन। अगर इससे कंपेयर करें देन इट इज गिवन a,4। आप देखेंगे द y कोऑर्डिनेट इज सेम, सो द x कोऑर्डिनेट मीन द वैल्यू ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू -4। देखिए, ये a है, दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज आल्सो x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, बट इट मींस द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू -4। So you can write therefore a is equal to -4। a का वैल्यू हमें पूछा है, so what will be the value of that is -4। That's all for this question। So keep watching, thank you। Watch next video for more questions, thank you very much। Keep watching, thank you।